Okay, so user defined functions are the functions created by programmer to perform specific tasks. So we have seen how to define function. So syntax for defining function definition is like this: def book. We use def keyword to define the function, followed by function name, then round parenthesis and colon. And whatever line you will include inside this function, all those statements will be indented. Okay, once you define the function, you have to call that function to execute the statements written within the function. तो ये जो आप end में देख रहे हो book and parenthesis, this is nothing but the function call. Okay, so I have shown you function name in bracket. You can pass the parameters. If you have function arguments, you can pass those arguments here in the bracket, and this is how we call the function. Okay, now today we'll start with function arguments. Okay, so for any function you can pass arguments. How to pass the arguments? Here you can see one example is given for the function. What is name of function here? Yes, what is name of function? Arithmetic operation. Right, arithmetic operation. This arithmetic operation is the name of function, and x comma y, these are nothing but the function arguments. And why do we need to pass this argument? Because we want to process these arguments inside the function. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम कुछ तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑन दोज आर्ग्यूमेंट्स. जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं x स्टार y, x डिवाइडेड बाय y, x प्लस y, x माइनस y. ओके, और जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो यू विल पास टू आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन, एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल गिव यू रिजल्ट. ठीक है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स तो आपको पता ही होंगे, राइट? या ये प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है? यस, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वैसे ही पाइथन में भी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स है. ये आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है या नहीं मैम. ओके. नाउ विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो जो नॉर्मली हम आर्ग्यूमेंट सेंड करते हैं फंक्शन में, जैसे a कॉमा b यहाँ पे सेंड किया हुआ है, these are called as positional arguments. So these positional arguments are passed to the function in the same order as parameters are defined. ठीक है, तो जब आप add 3, 5 बोलोगे तो ये इसी ऑर्डर में इस फंक्शन को जाएगा. मतलब a की वैल्यू जाएगी 3 एंड b की वैल्यू जाएगी 5. These are called as positional arguments. Okay, this is the first type of argument which is very common in all programming languages. Okay, now we'll see some different arguments that are used in Python. So second type of argument is keyword argument. So these arguments are passed to the function using the parameter names as keywords. Okay, तो यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया. ओके, यहाँ से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन at the time of calling the function, what we are passing, we are not just passing the values here. What we are passing, we are using parameter names as keywords. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ name is equal to Alice, age is equal to 25, right? So we are passing here parameter names. Okay,
तो जब आप पैरामीटर नेम्स पास करते हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो सेम फंक्शन आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, जैसे इंट्रोड्यूस एंड इन ब्रैकेट एज इज इक्वल टू 25, नेम इक्वल टू एलिस। क्यों ऐसे कर सकते हो? बिकॉज दीज आर द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वेयर यू हैव स्पेसिफाइड नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, आपने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई किया है, इसलिए एज को 25 ही जाएगा और नेम को एलिस ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने आर्ग्यूमेंट के नेम स्पेसिफाई किए हैं एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, सेम नेम्स यू आर यूजिंग एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। ओके, तो ये हुआ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। Then next type of argument is default argument. This is the third type of argument, that is default argument. So what is default argument? At the time of function definition you give some default value to the argument. जैसे यहाँ पे हम function define कर रहे हैं greet, और जब हम function define कर रहे हैं at the same time we are giving this parameter name और उसको कुछ value भी assign किया हुआ है, that is guest, राइट। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैसे वर्क करता है कि अगर आपने फंक्शन कॉल किया ग्रीट विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा? गेस्ट एज अ वैल्यू टू दैट पैरामीटर। ओके, और अगर आप कुछ वैल्यू पास कर रहे हो एलिस, तो इट विल रिप्लेस दिस गेस्ट विथ एलिस। ठीक है, तो विदाउट एनी पैरामीटर इफ यू आर कॉलिंग ग्रीट, योर आउटपुट विल बी हेलो गेस्ट। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है हेलो एंड देन नेम, तो नेम में वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? गेस्ट। और अगर आप पास कर रहे हो एक्सप्लिसिटली ग्रीट एलिस, देन योर आउटपुट विल बी हेलो एलिस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Yes. Okay, now till now you might have seen many times that we can pass arguments to the function, but those arguments are fixed in number, राइट। जैसे इसके पहले हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखा, इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट था, राइट। तो ये जो ग्रीट आप कॉल करोगे तो उसमें आप एक आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो, या फिर हमने यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में देखा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस नाम का फंक्शन है, इसको हमने दो ही आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो जब आप कॉल करोगे तो आप कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजोगे? दो, राइट। सेम फॉर पोजिशनल, तो जितने आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स, जितने आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन मेंशन करते हो, उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आपको फंक्शन कॉल में देने होते हैं, राइट। लेकिन इन पाइथन देयर इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ओके, सो दिस वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट इज द फोर्थ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। हियर function can accept variable number of arguments using star args for positional arguments and star kwargs for keyword arguments। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल है स्टार args का। तो ये क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो व्हाट विल डू हियर, यहाँ पे एक फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें हमने पैरामीटर क्या दिया है? स्टार args। तो जब आप स्टार args ऐसा आर्ग्यूमेंट फंक्शन में दोगे, तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग यू कैन गिव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिए हैं, वैसे आप 5 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अभी आर्ग्यूमेंट्स एक्सेस कैसे करने हैं? सो यूजिंग फॉर लूप you can get one by one argument you have passed। तो यहाँ पे हमने for loop लिखा है for arg in args print arg, means it is a list in which we are accessing one by one argument. This is the list of argument and then we are printing it, so your output will be 1 2 3।
Why it is called as variable length argument? Because here you can give any number of arguments. Okay, same like that you can use it for कीवर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ओके, तो कीवर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. सिर्फ आपको यहाँ पे पैरामीटर क्या लिखना है, स्टार स्टार KWARGS. ओके, सो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. Okay, so at the time of calling you can give keyword arguments like this: name equal to Alice, age equal to 25. और यहाँ पे जैसे हमने दो लिए हैं वैसे आप एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे ले सकते हो. 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो. ठीक है. नाउ हाउ टू एक्सेस देम. एक्सेस कैसे करने हैं? फॉर की कॉमा वैल्यू इन KWARGS डॉट आइटम्स. ठीक है, तो ये क्या है, एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट है. सो जिससे हम वन बाय वन आइटम एक्सेस करेंगे. की में वैल्यू जाएगी ये, और ये वैल्यू जो है इसमें जाएगा नेम, इसमें जाएगी नेम की वैल्यू. ओके, सो वन बाय वन की वैल्यू पेयर वी आर गोइंग टू एक्सेस थ्रू दिस फॉर लूप, एंड हियर वी आर प्रिंटिंग इट. आया समझ में वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट? For that you can use this star ARGS and star star KWARGS. Okay, I'll show you its execution. For now, just try to understand. Is it clear? Yes, ma'am. Fine. Okay, अभी हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का, एंड देन विल मूव फर्दर. ओके, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं फंक्शन को. Okay, next concept to understand about function is scope. Okay, scope of the variable. So what is scope? कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसका एक स्कोप होता है कि कौन से लेट्स से कितने कौन से लिमिट तक आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, एवरी वेरिएबल हैज अ लिमिटेड स्कोप. So scope refers to the accessibility of variables in different parts of code. So in Python, scope is determined by the location where the variable is declared. So if you are defining any variable outside the function, outside any block, it becomes global variable. ठीक है, और ऐसे और अगर आपने कुछ वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिए तो उसका स्कोप फंक्शन तक ही रहेगा. अगर आप फंक्शन के बाहर डिफाइन कर रहे हो तो उसका स्कोप ग्लोबल रहेगा. ठीक है, so global scope means variables declared outside any function or block will have a global scope and can be accessed anywhere in the code. ठीक है, तो x, ये x जो है ये आपने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, तो ये आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी यूज कर सकते हो. जैसे मैंने इस डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पे x को यूज किया. ठीक है, तो when you define any variable outside the function or any block it becomes global. When you define that variable inside the function it becomes local to that function. ठीक है, got Yes, it? ma'am. Okay, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है लोकल स्कोप का. Here I have defined one variable y equal to 5, and I ये have, सिर्फ विदिन द फंक्शन ही एक्सेस करेंगे. sorry, इट विल बी एक्सेस विदिन द फंक्शन. राइट, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा. मतलब मैं अगर यहाँ पे कर रही हूँ प्रिंट y, देन इट विल नॉट एन इशू. लेकिन जैसे ही मैं फंक्शन से बाहर आई, मतलब मैंने ये इंडेंटेशन निकाल दिया. ठीक है, ओके, यहाँ से मैं कॉल कर रही हूँ फंक्शन को. लेकिन अगर मैंने ये प्रिंट y किया, ओके, जैसे ही मैंने ये इंडेंटेशन निकाल दिया, मतलब ये स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर हुआ, तो ये यहाँ पे अगर मैं y एक्सेस कर रही हूँ तो इट विल गिव मी एरर दैट y इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन. गॉट इट? तो इसका जो y स्कोप है ये क्या हुआ, लोकल स्कोप.
ओके। और यही y इज इक्वल टू 5 अगर मैं इस फंक्शन के बाहर निकाल देती हूँ तो उसका स्कोप हो जाएगा लोकल। ठीक है। ग्लोबल हो जाएगा ना मैम। ओ माय गॉड, सॉरी। जैसे ही मैं ये y इज इक्वल टू 5 को बाहर निकाल देती हूँ तो इसका स्कोप हो जाएगा ग्लोबल, राइट। सॉरी। और जब हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसका स्कोप होता है लोकल। क्लियर? यस मैम। Okay. And the last concept about function is return statement. Okay. So return statement is used to exit the function and return some value. Okay. So you can return some value from the function like this, return a plus b. So this add function will return some value that you can store in some variable. Okay. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो result equal to add 3, 5. तो ये जो ऐड फंक्शन का कॉल होगा ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, वो हम रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। these are very simple examples I have given because we are going to have that practice assignment where you will learn in detail about the function. okay, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स डाले हैं। नाउ we'll solve some examples based on functions. Okay, I will again share the screen. Is the screen visible? यस मैम भेजिए। Okay, so we have already completed the first assignment which was based on built-in function and its types. Now we'll solve the second assignment on user-defined function. Okay, so here first question is define a function greet that takes no parameters and print hello world when called. Okay, very simple. We'll start with simple and then move towards little bit complex functions. Okay, ये कमेंट कर देते हैं। ओके, क्या करना है हमें? सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन करना है, ग्रीट। हाउ टू डिफाइन द फंक्शन, बताओ। ग्रेट हियर ब्रैकेट। नेम ऑफ द फंक्शन इज ग्रीट। ओके, इसके बाद क्या करना है? कोलन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, ये क्या हुआ? फंक्शन डेफिनेशन, राइट। यस मैम। कॉल इसके। नाउ वी हैव टू कॉल द फंक्शन, सो डोंट फॉरगेट टू डिलीट द इंडेंटेशन। ओके, अदरवाइज क्या होगा, आपका कॉल भी फंक्शन के अंदर ही चला जाएगा, तो रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा। Okay, so we have got this message. Now let us see the second question. Define a function greet user that takes one parameter name and prints hello name. Call the function with different names. Okay, तो अभी हमें एक
फंक्शन बनाना है विथ वन आर्ग्यूमेंट. ओके, एंड कॉपी सेम फंक्शन. इसमें हम चेंज करेंगे. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? नेम, राइट. इंस्टेड ऑफ वर्ड हमें यहाँ पे क्या करना है? नेम, राइट. और यहाँ पे हम वो पैरामीटर का वैल्यू सेंड करेंगे. ओके. Okay, so you can see here that name is replaced with the name which we have sent at the time of calling the function. ठीक है. Now third question here is define a function introduce that takes two parameters, name and age, and here for age we want default value 18. और हमें क्या प्रिंट करना है? My name is the name which we are passing and my age, and I am this years old. Call the function with and without age parameter. Okay, तो ये हम ट्राई करते हैं अभी. Here we are going to learn default parameters. Okay, so here I am going to define a function introduce. Okay, with two parameters, name comma age. Now age will have a default value, that is 18. Okay, and from here we'll print. ये इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ. Okay, my name is name and I am dash this age years old. Okay, now we'll call the function introduce. We will just pass here value for name. Okay, and now I'll execute this. So what output I am getting? My name is Mayuri and I am 18 years old. Okay, but I have not passed any value for age here, but we have set this as a default value, so that is why it is taking that default value. Okay, now instead of default value, if you want to pass some value, you can pass. So if you see here, now I am getting this message, my name is Mayuri and I am 30 years old. Okay, so this value with this 18 value is now replaced with 30. आया समझ में डिफॉल्ट वैल्यू? Yes, ma'am. The next question, define a function calculates sum that takes variable length positional arguments and returns their sum. Okay, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, def calculate sum और ब्रैकेट में क्या करना है? फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. यस, बताओ.
फास्ट। क्या देना है इसके अंदर? वेरिएबल का नाम है। क्या देना है? वेरिएबल का नाम। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब हमें ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। एस्ट्रिक्स करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन, उसके बाद क्या लिखते हैं उसके बाद? कीवर्ड में। इसके बाद हम लिखते हैं सॉरी मैम, यार ये ARGS, राइट? देन कोलन, इसके अंदर हमें क्या चाहिए अभी? पोजिशन, सॉरी, इट विल टेक वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। सो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बोला है, इसलिए हमने क्या लिया? ARGS। ओके, और हमें क्या रिटर्न करना है? सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सम करने के लिए? आर्ग्यूमेंट्स एक्सेस कैसे करते हैं हम? बोलो। फॉर लूप के अंदर फॉर, लेट्स से नम इन ARGS, राइट? क्या करना है हमें? हम यहाँ पे एक सम वेरिएबल लेते हैं, सम इक्वल टू 0, और फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे? सम, सॉरी, प्लस इक्वल टू नम, राइट? और यहाँ से हम फंक्शन कॉल करेंगे, और ये जो फंक्शन हम कॉल करेंगे इसको हम कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 5 दिए। लेट अस एग्जीक्यूट दिस। सॉरी, यहाँ पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट सम इज sum. Okay, now if I execute the function, oh, why it is giving me so many times? Yes, can you identify the mistake? ये जो प्रिंट है वो फॉर लूप के दो बाहर, वैल्यू में ऐड करना है। ठीक है, फॉर लूप के बाहर अभी मैंने कर दिया। नाउ वी आर गेटिंग सम ऑफ द नंबर। ठीक है, 1 to 5। वैसे आप यहाँ पे कितने भी नंबर दे सकते हो। ओके, जैसे हमने अभी 5 दिए, यू कैन गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स, तो ये 3 का ही सम देगा। ठीक है, ये हुआ वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। गॉट इट? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिफाइन अ फंक्शन स्क्वायर दैट टेक्स वन पैरामीटर x एंड रिटर्न इट्स स्क्वायर।
ओके, ये तो बहुत सिंपल है, ये आप कर लोगे। डिफाइन फंक्शन स्क्वायर, एक फंक्शन स्क्वायर नाम का डिफाइन करना है, उसमें एक पैरामीटर होगा x एंड इट विल रिटर्न स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है। Then next is define a function calculate area that takes two parameters length and width, and it will calculate area of rectangle, returns the result. ओके, ये हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, I'll just comment this. एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कैलकुलेट एरिया, जिसके दो पैरामीटर्स होंगे लेंथ एंड Great. विड्थ। ओके, ये क्या रिटर्न करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेंथ स्टार width, okay, and we have to return this area. So हम क्या करेंगे, return area. Now when we'll call the function, that function will return the value. वो वैल्यू हम स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे मैंने लिया वेरिएबल ar इक्वल टू कैलकुलेट एरिया, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू पास करेंगे 20 और 10। ठीक है, एंड देन we can use print area of rectangle, sorry, ar. Okay, if I execute this, so area of rectangle is 200. ओके, तो ये हमने सिंपल प्रोग्राम है, सिर्फ यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है जो आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड देन लास्ट क्वेश्चन हियर वी विल ट्राई, ये आई थिंक सबका मिक्स है, हम ट्राई करते हैं। क्या है इसमें, डिफाइन अ फंक्शन यूजर प्रोफाइल दैट टेक्स फॉलोइंग पैरामीटर्स। ओके, तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है डेफ यूजर प्रोफाइल। ओके, विल गो वन लाइन बाय लाइन। यूजर प्रोफाइल फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसको हमें क्या करना है, फर्स्ट पैरामीटर चाहिए यूजर नेम विच इज पोजिशनल, तो हम यहाँ पे देंगे यूजर नेम। देन नेक्स्ट इज एज, ओके, विथ डिफॉल्ट वैल्यू 18, तो यहाँ पे हम देंगे एज विथ डिफॉल्ट वैल्यू 18। देन वी वांट हॉबीज विच इज वेरिएबल लेंथ पोजिशनल, तो यहाँ पे हम देंगे एस्ट्रिक ARGS फॉर हॉबीज, एंड देन वी वांट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन वेरिएबल लेंथ कीवर्ड। ठीक है, तो इसको हम देंगे स्टार स्टार KWARGS। ओके, और इनसाइड फंक्शन यू कैन प्रिंट ऑल दीज वैल्यूज, जैसे मैंने सबसे पहले यूजर नेम प्रिंट किया, प्रिंट यूजर नेम
इसमें हम प्रिंट करेंगे यूजर। Okay, then I'll use print age. Here I'll print age. ओके, तो इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा आप कितने इसमें वैल्यूज पास कर रहे हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट, हॉबीज विच इज वेरिएबल लेंथ पोजिशनल। तो वो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर वैल, क्या लिखती हूँ, फॉर एच इन, या फिर ऐसे लिखते हैं फॉर हॉबी इन ARGS। ओके, प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर के बाहर प्रिंट हॉबीज, और ये जो है प्रिंट, इसके अंदर हम लिखेंगे हॉबी। ओके, तो ये जितने भी हॉबीज आप मेंशन करोगे उतने सारे हॉबीज ये प्रिंट करेगा। फिर ये जो है आपका कीवर्ड वाला आर्ग्यूमेंट, उसके लिए फिर से हम फॉर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, फॉर की कॉमा वैल्यू। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हो, बट हम यहाँ पे की वैल्यू लेते हैं इन KWARGS। ओके, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम इसके अंदर ही प्रिंट करते हैं, प्रिंट की एंड वैल्यू। ओके, की एंड इट्स वैल्यू। आया समझ में? अब ये इसको हम अलग अलग टाइप से कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले तो यूजर प्रोफाइल कॉल किया और मैंने सिर्फ यहाँ पे यूजर नेम दिया मयूरी। ओके, तो ये क्या करेगा, ओके, इसने क्या प्रिंट किया, यूजर नेम एंड डिफॉल्ट एज। और जैसे मैंने हॉबीज और एडिशनल कुछ भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सेम फंक्शन आई कैन कॉल यूजिंग टू आर्ग्यूमेंट्स। तो ये अभी एज चेंज कर देगा, जो मैंने एज स्पेसिफाई किया है वो एज देगा, राइट। सेम फंक्शन वी कैन कॉल बाय गिविंग सम मोर आर्ग्यूमेंट्स, जैसे रीडिंग, सॉरी, रीडिंग एंड music. Okay, so if I execute this, what it will give me? See, username Mayuri, age 30, hobbies are reading and music. Okay, and same function I can call by giving some keyword arguments like address, sorry, address, Pune, comma, phone number, और यहाँ पे जैसे मैंने कुछ नंबर दिया। ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, आई थिंक कैसे लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। Keyword arguments,
address equal to Pune and phone number इक्वल टू कुछ वैल्यू. ओके, तो ये की वैल्यू पेयर में दिया. तो यहाँ पे फॉर की वैल्यू इन के डब्ल्यू ई एन जे एस, तो यहाँ पे टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक. जस्ट अ सेकेंड. ओ सॉरी, यहाँ पे हमें क्या देना था? डॉट आइटम्स. आई फॉरगॉट टू राइट दैट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अभी यूजर नेम आ गया, एज आ गया, हॉबीज आर रीडिंग एंड म्यूजिक, और जो भी आपने कीवर्ड आर्गुमेंट्स दिए वो भी प्रिंट हो गए. गॉट इट? आया समझ में ये सब? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन. अभी हमें और दो टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन देखने हैं, एनोनिमस फंक्शन और लैम्बडा फंक्शन, एंड देन विल सी रिकर्सिव फंक्शन. ओके, आज के लिए हम रुकते हैं. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं. Okay, thank you so much. We'll continue in the next lecture. Thank you, ma'am.